Start. With the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear educarians. I hope that you all are fine and taking advantage of online classes. Welcome in computer class. As you people know that in our previous lesson, we have done reading from page number 54 till 57 and we have done question number 1 and 2 of chapter number 5 on your computer notebook. In our today's lesson, we will do reading from page number 58 till 63 and we will do question number 3 and 4 of chapter number 5 on your computer notebook. So let's start. Material required for this lesson is computer book, lead pencil, eraser, highlighter, ruler and computer notebook. I hope that you all have collected all these things and get ready for the lesson. This is Computer in Action with Windows 10 and Microsoft Office 2013 book. Our today's topic is chapter number 5, Windows 10. Before starting our today's lesson, let's recall our previous lesson. In our previous lesson, we have learned about desktop. The first screen that appears on the monitor after the Windows OS is loaded is called the desktop. The desktop contains two items, icons and the taskbar. Icons. The small pictures on the desktop are called icons. When we double click an icon, a window gets opened or a program is executed. Some of the common icons on the desktop are My Computer and Recycle Bin. Next one is taskbar. The taskbar is the long horizontal bar at the bottom of the computer screen. Some of the important parts of the taskbar are Start button, Search button, frequently used and open programs, Notification area and Peek button. Learning objectives. After today's lesson, you will be able to define parts of a taskbar, changing the desktop background and components of a window. Now open page number 58, write day, date and today's task. Let's start reading. Start button. It appears at the bottom left corner of the taskbar. When we click on this button, a list of options or programs appears. This list is called the Start menu. We can use the Start menu to perform tasks such as starting a program, searching for a file or folder and shutting down the computer. Dear students, टास्कबार के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर जो आपको बटन शो होगा, दिस बटन इज कॉल्ड स्टार्ट बटन. When you click on the start button, a list of options appears. This list is called the start menu. You can use start menu to perform various tasks like searching for a file, shutting down the computer and starting a program. Next one is search box. Using the search box, we can quickly look for a program or an application on the computer and open it. सर्च बॉक्स से आप किसी भी प्रोग्राम को क्विकली सर्च कर सकते हैं. सर्च बॉक्स में आप प्रोग्राम का नेम टाइप करें. लाइक टू ओपन पेंट, वी कैन टाइप द वर्ड पेंट इन द सर्च बॉक्स एज शोन इन फिगर 5.12. नाउ ओपन पेज नंबर 59, राइट today's task. Figure 5.12 shows using the search box to open a program or an application. Next one is notification area. It is present at the bottom right corner of the taskbar. taskbar के bottom right corner पर आपको notification area show हो रहा है. It displays the time. इसमें आप time देख सकते हैं, date and a group of small icons that tell us about the status of some programs running on the computer. Notification area आपको time show करवाता है, date और वो तमाम programs जो आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पर. Next one is peek button. It is present at the end of the notification area. Notification area के end पे जो आपको बटन शो हो रहा है, this button is called peek button. Clicking on this button minimize all open windows and displays the desktop.
जब आप पिक बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी प्रोग्राम्स आपने ओपन किए हुए हैं वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे. In addition to the above mentioned part of the taskbar, there is a middle section of the taskbar. नोटिफिकेशन एरिया और पीक बटन के दरमियान में जो एक मिडल सेक्शन होता है, इट आल्सो शोज द आइकन ऑफ ऑल ओपन प्रोग्राम्स. ये भी आपको वो तमाम प्रोग्राम्स के आइकन शो करवाता है जो आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पर. दीज आइकन्स हैव अ लाइन अंडर देम. Next one is practice zone. I am one of the components of the Windows desktop. ये विंडो डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स हैं. आइडेंटिफाई में यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लाउड्स. नंबर 1 रिसाइकिल बिन. RECYCLEBIN रिसाइकिल बिन. नेक्स्ट वन इज स्टार्ट बटन. STARTBUTTON start button. Next one is notification area. NOTIFACATION notification AREA area notification area. Now open page number 60. Write today's task. Match each term with its correct description. Number 1 desktop. The first screen that appears on the monitor after the Windows OS is loaded. Next one is taskbar. Long horizontal bar at the bottom of the desktop. Next one is folder. A collection of files. Next one is icons. Small pictures on the desktop. Changing the desktop background. The picture that appears as the background of a desktop is called wallpaper. जो पिक्चर आपको डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर शो हो रही होगी, दिस पिक्चर इज कॉल्ड वॉलपेपर. अंडरलाइन दीज लाइन्स. Just as we like to change the picture displayed on the walls of a room from time to time, जैसे आप अपने रूम की वॉल से पिक्चर को टाइम टू टाइम चेंज करते हैं या वॉलपेपर को, we can also change the wallpaper on the desktop. सेम इसी तरह से हम डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं. We can choose to display our own picture, a painting we have made using MS Paint or a picture from the Windows Gallery as the wallpaper. वॉलपेपर के लिए आप उस पिक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने MS Paint में पेंटिंग की थी, और इसके अलावा आप विंडोज़ गैलरी में से भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ वॉलपेपर. To change the wallpaper, we can follow the given steps. We have 5 steps. Step 1, right click anywhere on the blank area on the desktop. Step 1 में हम डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करेंगे. A shortcut menu is displayed. Step 2, choose the personalize option. The personalization setting window opens. Then आप personalize option को select करेंगे. Step 3, click on the background option in the left panel of the window. Step 4, choose picture as the option in the background drop down list. फिर आप पिक्चर को select करेंगे. Step 5, click and choose any of the available pictures. You may click on the browse button and choose any other picture on the computer. आप browse बटन को क्लिक करके कोई भी पिक्चर कंप्यूटर से सिलेक्ट कर सकते हैं. The picture chosen by you is set as a wallpaper. जो पिक्चर आप चूज करेंगे वो एज अ वॉलपेपर सेट हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पे. नाउ ओपन पेज नंबर 61. Write today's task. This picture shows how we can change the desktop background. We have 5 steps. Step 1, right click anywhere on the blank area on the desktop. A shortcut menu is displayed. In step 2, choose the personalize option. The personalization setting window opens. Step 3, click on the background option in the left panel of the window. Step 4, choose picture as the option in the background drop down list. Step 5, click and choose any of the available picture.
You may click on the browse button and choose any other picture on the computer. The picture chosen by you is set as the wallpaper. Next one is tips and tricks. You can set a solid color as the desktop wallpaper by choosing the solid color option from the background drop down list and choosing the desired color. Dear students, आप किसी पिक्चर और पेंटिंग के अलावा किसी सॉलिड कलर को भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करके एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं. अंडरलाइन दिस टिप्स एंड ट्रिक्स. नेक्स्ट वन इज components of a window. As discussed earlier, every program in Windows OS appears in the form of a rectangular area surrounded by borders called the window. We can open multiple windows at the same time to work. हम एक टाइम पर मल्टीपल विंडोज को भी ओपन कर सकते हैं वर्क करने के लिए. Now open page number 62. Write today's task. Figure 5.16 shows parts of a window like ribbon, work area, vertical scroll bar and horizontal scroll bar. Let's us learn more about these parts of a window. More than one program. However, only one window can be active at a time. We can also change the size of the window by dragging its borders or corners. आप विंडो के बॉर्डर्स और कॉर्नर्स पर ड्रैग करके इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडो. अब हम विंडोज के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में लर्न करेंगे. टाइटल बार. द टाइटल बार इज अ हॉरिजॉन्टल बार दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो. इट डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द एक्टिव प्रोग्राम्स. आपकी विंडो के टॉप पर जो आपको हॉरिजॉन्टल बार शो हो रही होगी, दिस बार इज कॉल्ड टाइटल बार. टाइटल बार आपके जितने भी प्रोग्राम्स एक्टिव हैं उन सब का आपको टाइटल शो करवाती है. टाइटल बार अंडरलाइन दीज लाइन्स. द टाइटल बार आल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग बटन्स. कंटेंट, पिक्चर. नेक्स्ट वन इज मिनिमाइज बटन. दिस बटन इज यूज टू श्रिंक एंड ओपन विंडो. जो आपकी विंडो ओपन है उसको ये श्रिंक करने के लिए हम मिनिमाइज बटन यूज करते हैं. इनटू अ बटन दैट अपीयर्स ऑन द टास्क बार. क्लिकिंग द बटन ऑन द टास्क बार मेक्स द विंडो अपीयर अगेन ऑन द डेस्कटॉप. नेक्स्ट वन इज मैक्सिमाइज बटन. दिस बटन डिस्प्लेज द फुल स्क्रीन व्यू ऑफ अ विंडो. इस बटन पर क्लिक करके आप विंडो का फुल स्क्रीन जो है आप उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट वन क्लोज बटन. दिस बटन इज यूज टू क्लोज अ विंडो. Now open page number 63. Write today's task. The store down button. This button appears when the window is maximized. ये बटन हमें तब शो होता है जब हमारी विंडो जो होती है वो मैक्सिमाइज होती है. इट चेंज द विंडो टू इट्स ओरिजिनल साइज. विंडो को उसके ओरिजिनल साइज में चेंज करता है. नेक्स्ट वन इज रिबन. इन मैनी विंडोज यू विल फाइंड अ रिबन बिलो द टाइटल बार. द रिबन कंटेन्स कमांड्स दैट हेल्प अस टू वर्क. रिबन में हमारे पास कमांड्स होती हैं जो हमें वर्क करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं. अंडरलाइन दीज लाइन्स. नेक्स्ट वन इज वर्क एरिया. अ वर्क एरिया इज अ प्लेस वेयर वी कैन वर्क. वर्क एरिया हमारे पास वो जगह होती है जहां हम अपना वर्क करते हैं. एंड द कंटेंट्स ऑफ अ विंडो आर डिस्प्लेड. और इसमें हमारे पास विंडो के जो कंटेंट्स होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं. अंडरलाइन दीज लाइन्स. In Paint, for example, the work area is known as the drawing area. Paint में हम work area को drawing area भी कहते हैं. We draw and paint in this area using different tools. Scroll bars. Scroll bars appear when all the items in a window cannot be seen at the same time. जब आप विंडो के तमाम आइटम्स को एक टाइम पर सी ना कर सकें तो आप स्क्रोल बार्स को यूज करेंगे. अंडरलाइन दीज लाइन्स. The two types of scroll bars are horizontal scroll bar and vertical scroll bar. Horizontal scroll bar. It is located at the bottom of a window. We can use this scroll bar to move to the right and left of a window. आप विंडो के लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए horizontal scroll bar को यूज करेंगे. Next one is vertical scroll bar.
It is located on the right of a window. We can use this scroll bar to move up and down a window. एक विंडो पे हम अप एंड डाउन जाने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज करेंगे. We can also click on the arrow buttons or drag the scroll button using a mouse to scroll. Now it's time for notebook work. This is your computer notebook. Before starting notebook work, firstly you will write index on this page. Our today's index is serial number 5, date, topic, chapter number 5, question answer 3 and 4. Firstly, draw a margin line, then write day, date and today's task. Topic, chapter number 5, question answer 3 and 4, Windows 10. Question number 3, what happens when you delete a file or a folder? Answer, when you delete a file or a folder, it goes to the recycle bin. We can double click on this icon to view the deleted file or folder. Now open next page, draw a margin line and then write today's task. Question number 4. How can you quickly search for files and folders? Answer, to search for a file or folder on your computer, use the taskbar search box, enter the name of the file or folder you are looking for and computer will find the destination of the file you are. Open next page, draw a margin line and then write today's task. Looking for. I hope that you all have understood our today's lesson. Let's summarize it once again. In our today's lesson, we have learned about parts of our taskbar. The taskbar is the long horizontal bar at the bottom of the computer screen. Some of the important parts of the taskbar are Start button, Search button, frequently used and open programs, notification area and peek button. Next one is changing the desktop background. To change the desktop background, we have 5 steps. Step 1. Right click anywhere on the blank area on the desktop. A shortcut menu is displayed. Step 2. Choose the personalize option. The personalization setting window opens. Step 3. Click on the background option in the left panel of the window. Step 4. Choose picture as the option in the background drop down list. Step 5. Click and choose any of the available pictures. You may click on the browse button and choose any other picture on the computer. The picture chosen by you is set as the wallpaper. Next one is components of a window. The components of a windows are title bar, ribbon, work area and scroll bars. Now it's time for task to do. Revise highlighted points from page number 59 till 63. Write and learn question number 3 and 4 of chapter number 5 on your computer notebook. So, I hope today's lesson is helpful for you. I will see you in my next lesson. Till that time, take care yourself and others. Allah Hafiz.